Hello friends, welcome to Skillshot EduLife Private Limited. Let's start with a brief introduction about myself. Hi, my name is Chetan Chauraria. I am a qualified chartered accountant and I've cleared all these three levels of the CFA program. I, along with my three other partners, we have started Skillshot in the year 2017 with the objective of adding value to the lives of students via skill enhancement and practical application of those skills in order to facilitate both personal and professional growth. Today, as a finance enthusiast, I want to talk to you about an investment opportunity for students who wish to explore the financial world and later on take an informed decision whether or not they want to continue or pursue their career in finance. Right? The Investment Foundations program by the CFA Institute is the opportunity that I am talking about. When talking about an investment opportunity, there are a few factors that we should consider before we decide to invest. तो अपने कुछ किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, बी इट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और एनी कोर्स, कहीं भी जब अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अपने को करना पड़ता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा. तो वो जो अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं ना इन्वेस्टमेंट का, उसी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ. एंड टुडे आवर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज द CFA इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट फाउंडेशंस प्रोग्राम. First factor being the eligibility of the investor. Is the investor eligible to invest in the product as per the guidelines? So अगर आप CFA Institute की guidelines को study करोगे तो there is no such eligibility criteria, which means everyone and anyone can register for this program. The next point to consider is the quality or credibility of the product. As this is a product of the CFA Institute, the Investment Foundations program, as since this is a product of the CFA Institute, there is absolutely no reason to doubt the credibility of this program. Potential value expected. इसको हम लोग finance के terms में बोलते हैं return on investment. As a finance enthusiast, I can tell you that if you are looking to get a basic idea of what finance looks or feels like, this program communicates more than what you are expecting it to deliver. You will gain a solid understanding of the various financial instruments. जैसे आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट्स क्या होता है, तो उसके लिए इक्विटी होता है. डेरिवेटिव्स एंड इक्विटी comprises of the stock markets. There is bonds. There are alternative investments. These are the financial instruments which we will learn about, and how the financial services industry as a whole is linked to the economic growth and how it contributes to the economic growth. The details lie in the curriculum of the program, which I have shared in the description below. Okay. The next factor, suitability of the product. Suitability का मतलब होगा क्या ये प्रोग्राम मेरे को सूट करता है, मेरे रिक्वायरमेंट्स को सूट करता है. So let us first understand कि ये जो प्रोग्राम है ये किन लोगों के लिए सूटेबल है. So I particularly feel there are 4 categories of students जिनके लिए ये प्रोग्राम एकदम रेलिवेंट है. The first being 10+2 students जिन्होंने अभी अपना क्लास 12 एग्जामिनेशंस को पास किया है एंड किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर, बिकॉज ये प्रोग्राम के लिए आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं लगेगा. एकदम ग्राउंड लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए. सो 10+2 स्टूडेंट्स इज द फर्स्ट कैटेगरी. द सेकेंड कैटेगरी इज जो भी स्टूडेंट्स दूसरे अनरिलेटेड स्ट्रीम से, जैसे इंजीनियरिंग, आर्ट्स, साइंस बैकग्राउंड, जिनको फाइनेंस का एकदम भी आइडिया नहीं है, बट they always wanted to enhance their skills in finance. So this is a very opportunity, very golden opportunity जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज इसमें एवरीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सिखाया जा रहा है. सो यू डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अकाउंटिंग नॉलेज और कॉमर्स नॉलेज और एनी मैथ्स knowledge as of the fact. The third category of the students that I'm talking about is those who are pursuing graduation and are looking for a job in finance. This Investments Foundation program will be a major add-on to your CV and will obviously give you an added advantage over other candidates. The fourth category of students that I'm talking about, they are the CFA aspirants. The students who are aspiring to pursue the CFA program must obviously before investing in the CFA program, because अगर मैं बात करूँ CFA program की, it is a minimum 2 years of investment and कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आपका खर्चा होता है CFA प्रोग्राम कंप्लीट करने में. तो अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट फाउंडेशंस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लोगे, इट विल गिव यू सॉलिड अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या फाइनेंस में फर्दर आपको परस्यू करना है, वेदर यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन दिस फाइनेंस. तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टमेंट फाउंडेशंस प्रोग्राम. सो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जिनके लिए ये प्रोग्राम सूटेबल है. The next point is
द इन्वेस्टमेंट पीरियड, कि मेरे को कितना टाइम के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है, राइट। द शॉर्टर द इन्वेस्टमेंट पीरियड द बेटर इट इज फॉर यू, कि आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाएगा उस चीज का, राइट। सो इस प्रोग्राम का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, दैट इज इट इज अ 6 मंथ पीरियड. विद इन द 6 मंथ पीरियड यू हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम, एंड आपको रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करना. जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करते हो, द रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड इंस्टेंटली, एंड आपका रिजल्ट एकदम तुरंत आ जाता है आपके सामने. तो विद इन 6 months you can complete this program, and this investment period is fairly relatively low as compared to the other programs if you compare it with the CFA program as well, which is of 2 years. The next factor is liquidity, which means how fast you can convert this investment into money by getting a high paying job or starting your own investing business or investing personally, right? So liquidity aspect इसमें हल्का सा नेगेटिव है, because you cannot expect to land yourself in a high paying job straight away after completing this program. This is a very foundational program जो complete करके आप जो knowledge होगा उस पर अपॉन आप build कर सकते हो, right? You can then decide to be a professional expertise in this field after completing this program. Okay. The seventh factor is timing your investment. It is one of the major factors. जैसे अपने देखते हैं ना कि शेयर प्राइस एकदम गिरा हुआ भाव पे अपने परचेज करे ताकि एकदम हाई प्राइस पे अपने सेल कर सके, तो वो जो गिरा हुआ प्राइस पे परचेज करने का बात हो रहा है, दिस इज व्हाट टाइमिंग इज ऑल अबाउट, राइट? सो देयर आर टू मेजर रीजंस दैट दिस टाइम is the perfect time to invest in this type of program. The number one reason is nationwide lockdown चल रहा है, there are high unemployment rates, and you can utilize this time to enhance a skill so that you can increase your chances of employability post lockdown. The second reason is that ये program at this point of time is absolutely free of cost. तो आपको ना ही कोई registration fees देना है CFA Institute में, ना ही कोई examination fees देना है. Earlier it costed about $250, which if you calculate is about approximately rupees 20,000 in Indian rupees. ये प्रोग्राम आपको अभी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, एंड आई गेस दिस इज अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर. इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं दिया है कि ये ऑफर कब तक रहने वाला है, तो आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट एनी टाइम. जब अगर ये ऑफर निकल गया तो फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे. इट इज बेटर यू रजिस्टर इट एज सुन एज पॉसिबल. Number 8 factor is the risk of investment. There is absolutely no risk in the present circumstances. As you have ample amount of time, you can invest it. आपका डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट और आपका टाइम आप अभी दे सकते हो, दैट इज बेसिकली द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, एज सिंस दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. The ninth factor is knowledge about the product. This is where Skillshot as a training institute can help you. We have come up with an online education program which is of the duration of 3.5 months, comprising of approximately 45 classes to be conducted by me. And through my knowledge and experience in this field, I can guide you to take this program in the most efficient manner. Last but not the least, the 10th factor is the process of investment. जब एक बार हम लोग डिसाइड कर लिए कि अब मेरे को इन्वेस्ट करना है इस प्रोग्राम में, तो what is the process of investment? That is, how should I register for this program? You have to visit cfainstitute.org. This is the website for more details regarding the registration process. Further, we can help you to register for this program by showing you a demo. Okay, so this was about all the factors that we had discussed about, to decide whether or not we should invest in this program. So we as an institute, we highly recommend you to pursue this program. You can either choose Skillshot to guide you or anyone else, or you can do it by yourselves. That's absolutely your choice, right? But if you want us to guide you, you can call us or WhatsApp us at the number shown in the screen, right, for further information about the 3.5 months online education program that we have started. All right. Thank you for listening to me, and share this video with your friends so that they can also know about it.